Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Well, students, today's topic is about cleaning of water. Water can contain, many kinds of germs, dirt, salt, and other dissolved impurities or things in it. And because of these dissolved impurities, it can cause diarrhea and many other diseases. So water needs to be purified. What is purification of water? The process of removing impurities from water is known as purification. Purification means पानी को जो purify करना है, उसका क्या मतलब है कि आप उसमें से वो चीज़ें निकाल दें जैसे कि germs, dirt, salt or other dissolved substances in it. So removing the process of removing impurities from water is known as purification of water. Very simple. What is purification of water? The process of removing the impurities from water is known as purification of water. Now what are the methods for purification? One of the methods is filtration. This is very widely used. Normally in the laboratories, we use this kind of method for purifying water. And in this way, the suspended impurities can be removed. For example, you take a funnel and you put a beaker underneath this, and then put a paper inside it, a filter paper inside it, and then you should pour water over it. And when you pour water over it, it will pass through the filter. The impurities will get stuck over here and the water will be going down. So the water will be getting collected into the beaker. So the first process is known as filtration, and this is normally used in the laboratories. The second method is, and filtration is a method in which you use a filter paper, and the filter paper collects the suspended impurities, यानी वो वाली impurities को साफ कर सकते हैं इस तरीके से जो पानी में हाल नहीं हुई. ऐसी मसलन रेत है या उसमें मट्टी चली गई है या और कोई suspended impurity है. Suspended particles and insoluble salts are left on the filter paper. जो सॉल्ट्स हल नहीं हुए ना, इनसॉल्युबल है, वो उसके ऊपर जो है ना कागज़ पे चिपक जाएंगे. मतलब कहने का ये है कि फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच यू कैन रिमूव दोज इम्प्योरिटीज विच आर सस्पेंडेड इन इट और विच आर जो इनसॉल्युबल, जो कि उसमें हल नहीं हो सकती, जो हल हो गई हैं उसके अंदर पानी के अंदर, वो आप उसमें से रिमूव नहीं कर सकते. To remove dissolved substances present in water, special membranes can be used. अगर आपने जो dissolved impurities को निकालना है अंदर से, तो फिर स्पेशल किस्म की membranes इस्तेमाल करते हैं जो कि उसको अलहदा कर सकते हैं. These membranes have microscopic pores to separate dissolved substances. तो इसके जो अंदर जो है ना, जो स्पेशल membranes हैं उसमें स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं जो उसको रिमूव कर सकते. लेकिन आम जो फिल्टर पेपर है वो इस्तेमाल में लाते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और जो कि डिसॉल्व नहीं हुए. Now the second method of removing or cleaning water or purification of water is known as boiling. Boiling is the safest way to purify water. पानी को पाक करने के लिए, साफ करने के लिए, पीने के काबिल बनाने के लिए आप पानी को बॉयल भी कर सकते हैं. और बॉइलिंग इज़ वेरी वाइडली यूज्ड. हमारे गांव में भी इस्तेमाल होती है, शहरों में भी इस्तेमाल होती है. इट इज़ वेरी वाइडली यूज्ड. दिस वे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया उसमें होगा या जर्म्स होंगे या अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, दे विल बी किल्ड. बॉयल करने से वो मर जाते हैं. 15 से जो है ना 30 मिनट बॉयल करते हैं पानी को, और उसके बाद पानी ठंडा कर लेते हैं, तो वो उसमें वो पीने के काबिल हो जाता है. और जो कोई उसमें सॉल्ट्स वगैरह होते हैं बाज़ औक़ात वो नीचे बैठ भी जाते हैं उसके अंदर. So boiling is also one of the first process was filtration. The second method of purification of water was boiling, and the third is
chlorination. Now this method is also used in this method you purify water by adding chlorine in it or bleaching powder in it. The household bleach जो घर में आप household bleach इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल में आ सकती है क्योंकि bleach में क्लोरीन होता है. तो इसके मेथड क्या है? प्लेस वाटर इन अ क्लीन कंटेनर, पानी को एक साफ बर्तन में रखते हैं एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच. जो घर की जो ब्लीच है ना, जो इस्तेमाल घर में आप करते हैं, वो वाली ब्लीचिंग पाउडर या वो जो है ब्लीच सोल्यूशन लिक्विड जो है वो इस्तेमाल कर लें. 1 लीटर पानी में 3 ड्रॉप्स उसके डालने हैं, 2 लीटर पानी में 5 ड्रॉप्स डालने हैं और 1 गैलन में 1/8वां हिस्सा चाय की चम्मच का अपने डालना है. Now in this way you can clean water for drinking purposes. The fourth method is use of potash alum. potash alum जो है, जब फटकरी को इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं. We can add potash alum to water to purify it. Clay, sand, suspended impurities can be removed. तो मिट्टी उसमें अगर हो या रेत उसमें तो वो नीचे उसमें बैठ जाएगी और बाकी पानी जो है ना ऊपर से आप उसको नथार लें, डिकैंट कर लें और इस तरीके से ये इस्तेमाल में पानी की पीने के काबिल हो जाता है. The fourth method is distillation. This is a method for removing soluble impurities. Distillation जो है ना, ये वो method है by virtue of which you can remove soluble impurities. ऐसी impurities को उसमें से निकाल सकते हैं पानी में से जो पानी में हल हो गया. मसलन पानी में आपने मिसाल के तौर पे बेकिंग पाउडर डाल दिया है या उसमें वो हल कर दिया है. अब उसको आप चाहते हैं कि इसको अंदर से निकालूं मैं, या आपने सॉल्ट नमक लिया और नमक उसमें हल कर दिया पानी में. सो दिस मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, कैन बी यूज्ड टू फॉर रिमूविंग द सॉल्ट दैट हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन वाटर. और इसका तरीका क्या है? इसका तरीका सिंपल है कि पानी को बर्तन में रख के बॉयल करें, उसके जो बुखारात निकलते हैं उनको इकट्ठा करें और एक दूसरे बर्तन के अंदर जो है ठंडा होने दें, तो वो बुखारात दोबारा पानी बन जाएगा. पहले जो है वो पानी से स्टीम बनता है, फिर स्टीम से दोबारा पानी बन जाएगा और इस तरीके से जो उसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ पानी की हैं वो जब बॉयल करते हैं तो उस बर्तन में रह जाएगी. एंड दिस प्रोसेस इज़ वेरी वाइडली यूज. इसी तरीके से हम डिस्टिल्ड वाटर बनाते हैं जो दवाइयों में हल करके टीके लगाने के इस्तेमाल में आते हैं. डिस्टिल्ड वाटर और भी किसी बेशुमार जगहों पर इस्तेमाल होता है, बैटरीज में इस्तेमाल होता है, एक्सेट्रा. डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस. डिस्टिलेशन वो अमल है ऑफ हीटिंग वाटर, पानी को गर्म करना, एंड कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, और उसको भाप में तब्दील कर देना. एंड देन कूलिंग स्टीम टू मेक इट इनटू वाटर, और फिर दोबारा स्टीम को आप जो भाप उसमें से बनी है उसको दोबारा ठंडा कर लें तो वो इस तरीके से पानी बन जाता है. इम्प्योर वाटर इज बॉयल्ड. इम्प्योर वाटर जो है, जो पानी जिसमें डिसॉल्व हुआ हुई हैं इम्प्योरिटीज़, उसको पहले आप बॉयल करते हैं. वाटर वेपर्स आर कलेक्टेड थ्रू अ पाइप एंड कूल्ड. और वाटर वेपर को आप, ये एक प्रोसेस है, ये एक फ्लास्क लिया आपने, इसमें आपने वो पानी डाला जो कि इम्प्योर है, जिसमें कोई हल शुदा उसमें आपने इम्प्योरिटीज़ डाली, लाइक सॉल्ट उसमें है, सॉल्ट वाटर है, इसको बॉयल किया. तो ये एक कंडेंसर है. कंडेंसर एक ऐसी बॉटल है जिसके सेंटर से जो है ना वो भाप निकल रही है, गुजरती है, और उसके दोनों तरफ जो है ना पानी डाला होता है. पानी भाप को ठंडा करती है तो फिर वो ड्रॉप्स यहाँ से नीचे गिर जाते हैं और बीकर में इकट्ठे हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस. इट्स अ वेरी क्लीन प्रोसेस बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस यू कैन रिमूव द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऑल्सो. As water vapors passes through condenser, they are cooled. Solid impurities remain at the bottom of the flask. तो अगर इसमें कोई impurities पानी में हलशुदा हैं वो यहाँ पे रह जाएंगी. So this is the one of the methods. Activities जो है उनको एक activity 5.3 इसमें है, which is that take salt water, take a glass bowl and small cup and plastic sheet and mark it. This is a method for distillation. This activity will help you to understand what distillation is. Put salt water in the bowl. Take a bowl and put salt water in it. Place a small, उसके अंदर सेंटर में एक छोटा सा कप रख दें.
in the middle of the bowl, उस बर्तन में जिसमें आपने रखा हुआ है ना salt water, जो impure water है, उसके सेंटर में एक और कप रख दें, कवर्ड विद प्लास्टिक शीट. तो उस बोल को प्लास्टिक शीट से कवर कर दें. यूज टेप टू होल्ड इट, उसके इर्द गिर्द टेप लगा रहे ताकि वो होल्ड हो सके. पुट ए मार्बल ऑन द प्लास्टिक शीट पर छोटा सा मार्बल रख लें. क्यों? ताकि हवा से प्लास्टिक शीट उड़ ना सके. प्लेस इन द सन फॉर सेवरल आवर्स, काफ़ी घंटे हवा उसको धूप में रखते हैं. वाटर विल वेपोरेट, पानी वेपोरेट हो जाएगा. सम गेट्स कलेक्टेड इन द कप, कुछ पानी उस कप में भी कलेक्ट हो जाएगा, बुखारात उसमें आएंगे और उसके अंदर आके दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे. व्हेन ऑल वाटर हैज़ वेपोरेटेड, सॉल्ट विल बी फाउंड इन द बॉटम ऑफ द बोल. जब सब पानी वेपोरेट हो जाता है तो सॉल्ट उसके सेंटर में आता है. नाउ दिस वाज जस्ट एन एक्टिविटी टू लेट यू नो हाउ डिस्टिलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड हाउ द impurities which are soluble in water can be removed. Now I will go over the main points again. This is the topic is of chapter 5 is cleaning of water. 5.4 is the topic, how to clean water. Water may contain many kinds of germs, dirt, salt and other dissolved substances. इसको प्योरीफाई कैसे करते हैं? What is purification of water? The process of removing impurities from water is known as purification. वो कैसे करते हैं? इसके methods कौन कौन से हैं? First method is filtration, second method is boiling, third method is chlorination and fourth method is use of potash, fifth method is distillation process. ये पांचवा मेथड कौन सा है इसका? डिस्टिलेशन प्रोसेस. डिस्टिलेशन के जरिए this one is distillation is E because it is the fifth method, not the fourth method. D was duplicated. So these are the 5 methods that you can use for purification of water. The filtration method is that method in which by which you can remove the suspended impurities from water. And what is filtration? It is the process of passing water through a certain funnel with filters in it. यानी filter कर लेते हैं. Filter से लफ्ज़ filtration निकला है. In the labs normally this method is used. Suspended particles and insoluble salts are left. यानी इसमें याद रखें जो suspended particles हैं जो उसमें नज़र आ रहा है कि उसमें गिर गए हैं पानी में, वो निकल सकते हैं इसमें से, और जो कि उसमें हल नहीं हुए insoluble salts जो हैं वो निकल सकते हैं. So filtration method is a method by which you can remove the suspended particles and insoluble salts. ठीक है? Insoluble salts remove हो सकते हैं. And when you pass it through the filter paper, all the suspended particles get stuck on over here. And if you want to remove the soluble salts also, then you have to use special kinds of membranes, and these membranes have the quality, they are microscopic, they are microscopic in size, and they have the quality of holding the soluble particles also. This next method is boiling method. This boiling method is a method in which you boil water for 15 to 30 minutes and all the suspended particles, all the soluble and insoluble, the insoluble particles will get sit in, or will go to the bottom of the can, and the soluble ones, they can be, you can kill the germs through it. Boiling is the safest way to purify water. This way bacteria, germs and other microscopic organisms present in water are killed. तो इस तरीके से germs हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसको मार देते हैं जब पानी में हल हो गया हुआ है. और बॉइलिंग को 15 से 30 मिनट करना होता है. बाद में ठंडा करके इस्तेमाल कर लें. पानी के ऊपर से निथार लें, जो उसके अंदर पार्टिकल्स कुछ सस्पेंडेड भी होंगे वो भी नीचे बैठ जाएंगे उसके, और जो जरासीम उसमें हल हुए हैं वो उसमें मर जाएंगे पानी को बॉयल करने की वजह से. और 15 से 30 मिनट बॉयल करना होता है. Another method is chlorination. This chlorination method is used
to kill the germs. In chlorination method, you use the bleaching powder or ordinary household bleach. You put a few drops in water as per the table, and these drops will kill the germs and bacteria which is present in water. Then the fourth method is use of potash alum, and potash alum is phatkari. You can add this to water to purify it. Clay, sand and suspended impurities can be removed. Water will be pure after decantation. उसके ऊपर से जब थार लेंगे तो वो जो है पानी जो है वो साफ निकलेगा. The next method is distillation method, one of the safest method, which kills the soluble bacteria also, or the soluble germs or the soluble substances. Distillation is the process of heating water. ये क्या अमल है? जब पानी गर्म करते हैं, उसको बॉयल करते हैं, बुखारात को इकट्ठा कर लेते हैं दूसरे बर्तन में, को ठंडा करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं. जितनी इम्प्योरिटी पानी के अंदर उसमें होती है वो नीचे बैठ जाती है उस फ्लास्क में जिसमें गर्म कर रहे हैं. Distillation is the process of heating water and converting into steam. So ये क्या प्रोसेस है? पानी को बॉयल करना और उसको स्टीम में कन्वर्ट करना, एंड देन कूलिंग स्टीम टू मेक इट वाटर. उसको बाहर ठंडा के पानी में दोबारा बच जाए. इम्प्योर वाटर इज बॉइल्ड. इम्प्योर वाटर जो होता है उसको बॉयल करते हैं. वाटर वेपर्स आर कलेक्टेड थ्रू ए पाइप, और उसको बर्तन के ऊपर से ढांप देते हैं, बंद कर देते हैं. एक पाइप के जरिए उसके बुखारात दूसरे बर्तन में डाल देते हैं, एंड देन दे आर कूल. इन दिस वे जो पानी दूसरी जगह इकट्ठा होता है, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज क्लीन वाटर. इट हैज़ नो इम्प्योरिटीज इन इट. And it's the safest way, it's the best way of getting pure water. This is one of the the apparatus that is used in the laboratory. It is a flask, and water is put, the contaminated water or water of impurities is put here. It is heated up. It passes through this tube from the small pipe, this funnel, and it is made to pass through a condenser. Around the condenser is a water body. There's water in it, so the vapors get cool and then they flow into the beaker and you can take this thing. Then there's an activity 5.3, which is simply activity of how you can separate or how can you do distillation process. Take salt in a bowl, and in the center of the bowl place a small cup. Cover the bowl with a plastic sheet. Use tapes to hold it in place. Put a small marble on it so that it doesn't get flown away. Then place this contaminated water along with the arrangements of putting the plastic sheet on it into the sun for about half an hour, or maybe more if it is required, and then after some time you will see that the water has all evaporated, leaving the impurities in the bowl, and some water will be collected in this small cup that you put there, and that small cup has vapors which got cooled off and became water. So in this way you will be able to purify water also, and this activity just tries to explain you how best to do it. Now I expect you to make your clean and tidy notes about it, and if you have difficulty, please talk to me on 0336 547 3312.